वेलकम टू CSR's IAS। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया एट COP27 और भारत के ही द्वारा लॉन्च किए गए इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन के बारे में। COP27 is happening between 6th and 18th November 2022 and interestingly is sponsored by Coca-Cola, which is the topmost plastic polluter in the world. COP जिसका मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCC की मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है, which is United Nations Framework Convention on Climate Change. Now, UNFCC was drafted in UNCED Rio or Earth Summit in 1992, but was enforced in the year of 1994. Its headquarters is in Bonn, Germany, and its status is of an international treaty with 195 signatory parties to it. अब ये COP कहाँ हो रही है ये देख लेते हैं। ये हो रही है इजिप्ट में, विच इज़ एन अफ्रीकन कंट्री। सिनाई पेनिनसुला या सिनाई ट्राइंगल के सदर्न एंड पर एक जगह है शर्म अल शेख, दैट मीन्स द वे ऑफ वाइज, जहाँ पर ये हो रही है। इसके पास आप मैप में देख सकते हैं देयर इज गल्फ ऑफ अकाबा। अब जान लेते हैं भारत के द्वारा लॉन्च किए गए इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन के बारे में। इट हैज़ बीन जॉइंटली लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाया द नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इंडिया। Its objective is to encourage youth between the age of 18 to 23 years to become message bearers of sustainable lifestyles. This campaign envisions to recognize youth from around the world taking climate action initiatives that resonate with the concept of life, that is, lifestyle for environment. Now, India desires to achieve a net zero target by 2070. इंडिया का ये टारगेट कुछ मेन पिलर्स पर टिका हुआ है, जिनमें बढ़ती हुई इंपॉर्टेंस दी गई है एटॉमिक एनर्जी और हाइड्रोजन पावर को। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंडिया के नेट जीरो टारगेट्स को, दैट आर इंडिया विल इंक्रीज इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट्स बाय 2030. Second, India will meet 50% of its energy requirements from renewable energy by 2030. Also, India will reduce the total projected carbon emissions by 1 billion tons from now to 2030. Also, by the same year, India will reduce the carbon intensity of its economy by 45%. Earlier, this target was 35% reduction. And finalizing on all these four goals, by 2070, India will achieve the target of becoming a net zero country. इंडिया के एनर्जी प्रोडक्शन पर एक नज़र डालें तो 402.8 गीगावाट इज द टोटल इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया अक्रॉस ऑल सोर्सेज. आउट ऑफ दिस 113.22 gigawatt is the total installed renewable energy capacity of India, and 166.7 gigawatt is the total non-fossil energy capacity of India. इंडिया के 2022 में रिन्यूएबल एनर्जी से कुछ टारगेट्स हैं, जिनको हम देखेंगे तो ओवरऑल 100 गीगावाट इट वांट्स टू अचीव फ्रॉम द सोलर, while 60 from wind and 10 from biomass with 5 from small hydel projects. एसोसिएटेड डेटा पर नज़र डालें तो एमिशंस फ्रॉम इंडिया रैंक थर्ड इन द ग्लोबल लिस्ट, अकाउंटिंग फॉर 2.46 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ द कार्बन और almost 7% of the total global emissions. India's per capita carbon emission are at 1.84 tons compared to the United States 6.21 tons. India currently has 22 operational nuclear reactors with an installed capacity of about 6,780 megawatts, which is close to around 7 gigawatts. COP27 में इंडिया ने कहा कि 2032 तक ये इस एटॉमिक एनर्जी को 3 गुना कर देगा. Now coming to some key points of the Paris Climate Agreement, there have to be continuous efforts to limit the rise in temperature to 1.5 degrees Celsius. Also, a floor amount of $100 billion from 2020 to be provided by the rich countries. Developed countries must continue to take the lead in the reduction of greenhouse gases and aim for greenhouse gases emission to peak as soon as possible. Also, developed countries must provide financial resources to help developing countries, and other countries are invited to provide support on a voluntary basis. A review mechanism is to be set up, and the first such review will be in 2025. Also, vulnerable countries have won recognition of the need of averting, minimizing and addressing losses suffered due to the climate change. अब सवाल ये उठता है कि ये एग्रीमेंट इतनी अच्छी तरह से चॉक्ड आउट है, but why isn't it working in the way it was supposed to be or envisioned to be? So there are some flaws in this also, which is no agreement has been reached yet on the loss and damage fund to help vulnerable countries cope with the damage caused by floods, drought and other climate events, basically caused by the climate change. Also, after much debate, the plan to give immediate aid to victims of climate disasters was finalized. The debate on carbon offset credits has been slow.
Such credits allow countries or companies to pay others to cut greenhouse gas emissions. Countries have also already pushed to 2023 the decision on which kind of projects can produce credits. Considering this all, we can always remain positive that India will achieve its target by the given time. ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।